स्वागतम सुस्वागतम। सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय शिव प्रताप शुक्ल जी, आज के अतिथि विशेष एवं भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री माननीय महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय महोदय श्री राजेश धर्माणी जी, मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, संस्थान के निदेशक महोदय श्री हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी जी, सभी उपस्थित अतिथिगणों, शिक्षकगण एवं समस्त छात्रों, हम आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। समारोह का शुभारंभ करने से पहले हम सभी अतिथिगणों एवं भागार में उपस्थित शिक्षण, कर्मचारी वर्ग एवं छात्रों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम आदरणीय महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के अनुरूप सम्मानित करें। अब हम आदरणीय निदेशक महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि वे माननीय राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को सम्मानित करें। इसी क्रम में हम आदरणीय निदेशक महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि वे आज के अतिथि विशेष एवं भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री माननीय महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को सम्मानित करें।
अब हम आदरणीय कुल सचिव महोदया डॉक्टर अर्णा संतोष नानोटी जी से अनुरोध करते हैं कि वे माननीय महोदय श्री राजेश धर्माणी जी मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित करें। अब हम आदरणीय निदेशक महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि वे सभा को अपने वचनों से अनुग्रहित करें। Chief guest of the event, Honorable President of India, Sri Jagdeep Dhankar ji, Governor of Himachal Pradesh, Honorable Sri Shiv Kangal ji, Sri Anurag Singh Thakur ji, Union Minister of Information and Broadcasting, as well as Youth Affairs and the Sports. Sri Rajesh Dharmani ji, Minister, Government of Himachal Pradesh, faculty and staff member of NIT Hamirpur, official accompanying with the honorable dignitaries, official of district administration, member from the press and electronic media, dear students, ladies and gentlemen, it is absolute honor and privilege to stand before you as the director of this esteemed institutions on this interaction session, role of youth in Viksit Bharat at 2047. It is indeed great privilege to welcome the guest of this event, Honorable Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar ji, to this wonderful and divine state of Himachal Pradesh. We all would be very keen to hear from you on our journey toward the Viksit Bharat, wherein youth have to play important part. It is absolute pleasure to welcome Governor of Himachal Pradesh, Honorable Sri Shiv Pratap Shukla ji, to this event. Your distinguished career in the public service is truly inspiring to entire NIT family. I would like to extend warm and hearty welcome to Sri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Union Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sport, Government of India. Your presence here today is the source of great inspiration for the entire NIT Hamirpur community. Being a member of Parliament from the Hamirpur Lok Sabha constituency, you have always been here to help out this institution as and when needed. I also extend my heartiest welcome to our alumni. Now Minister in Government of Himachal Pradesh, Sri Rajesh Dharmani ji. Thank you, sir, for your gracious presence in this interactive session. Chief guest, sir, your presence here today is the testament to the important place for the youth empowerment. We believe that your insight and word of wisdom is greatly motivate and guide all youth present here toward their futures. Honorable Vice President, sirs, I once again thank you for being here with us to bless all of us on this important occasion. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आपके संबोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब हम माननीय महोदय श्री राजेश धर्माणी जी, जो हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और इस संस्थान के छात्र भी रह चुके हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने शब्दों से सभा को संबोधित करें। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी, हिमाचल प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री,
भारत सरकार, एनआईटी हमीरपुर के निदेशक श्री मुरलीधर सूर्यवंशी जी, यहां उपस्थित सभी एनआईटी टीचर्स, एनआईटी स्टूडेंट्स, अन्य यहां पे उपस्थित सभी डिग्नेटरीज और मीडिया से जुड़े हुए सभी हमारे साथी, मैं अपनी तरफ से और हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से, आप सबकी तरफ से आदरणीय महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी का यहां पधारने के लिए, हिमाचल की इस दिव्य भूमि पर पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इनके साथ आए हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी का भी धन्यवाद करूंगा, और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, इनका भी मैं अपनी तरफ से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उपराष्ट्रपति महोदय जी, आपके आने से हिमाचल प्रदेश के युवाओं में, आम जनमानस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम, एक से श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम का भी समापन हुआ, जिसमें आपने अपना आशीर्वाद दिया, और यहां पर युवाओं की विकसित भारत के लिए क्या भूमिका होगी, उसके ऊपर ये चर्चा रखी गई है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस संस्थान का छात्र रहा हूं, और आज मुझे इस बात का हर्ष है, इस बात का गर्व है कि मुझे आपका स्वागत करने का इस स्टेज पे मौका मिला है, हिमाचल प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे। युवाओं की भूमिका निश्चित तौर पे हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें हमें बात की खुशी है कि हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ साथ एनआईटी हमीरपुर के जो एल्यूमनाई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल देश के, प्रदेश के हर विभाग के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हर विभाग के अंदर, चाहे आज जो हिमाचल प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, उसके जो एचओडीज हैं वो हमारे इसी कॉलेज के एल्यूमनाई। सिविल सर्विसेज में आज यहां के एल्यूमनाई आपको देखने को मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाएं, हम किसी भी प्रेस्टिजियस कॉरपोरेट में, हर जगह हमें एनआईटी हमीरपुर के एल्यूमनाई मिलते हैं, बल्कि दुनिया के हर कोने में। तो आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारे के यहाँ के पूर्व छात्र न सिर्फ हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, बल्कि पूरी मानवता को सर्व करने के लिए जो है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और इसका श्रेय हमारे यहाँ पे जो टीचर रहे हैं उनको जाता है, जो हमारे स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करते हैं, ना कि वो गवर्नमेंट जॉब में, बल्कि हर क्षेत्र के अंदर जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीछे हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत बड़े आपदा का सामना किया, और इस आपदा में हिमाचल प्रदेश के साहसिक जनमानस ने उसका बड़ी बहादुरी के साथ जो है सामना किया। हमारी सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ काम किया। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट का काम हुआ, जो डिजास्टर रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया, वो अपने आप में एक अनुकरणीय जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बड़े स्केल के ऊपर जो है उन्होंने रिहेबिलिटेशन का कार्यक्रम करवाया, जिसको ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने भी उसको है सराहना उसको दी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। अभी भी रिहेबिलिटेशन का बहुत सारा काम जो है होना है। तो मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय महोदय उपराष्ट्रपति महोदय जी का जो है वो हम अपने जो समस्याएं हैं हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम आपके माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पक्ष जो है वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश की और उदार सहायता दिलाने में जो है मदद करेंगे, और आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश और आगे बढ़ेगा, उन्नति के अवसर पर, उन्नति के जो रास्ता है उन्नति के शिखर पर जो है हम पहुंचेंगे। तो मैं इस अवसर के ऊपर आपकी भी हम जो है वो आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ
अंत में आप सबका धन्यवाद करता हूं और उपराष्ट्रपति महोदय का विशेष तौर पे, राज्यपाल महोदय का विशेष तौर पे आभारी हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम हमारे आज के अतिथि विशेष तथा केंद्रीय मंत्री माननीय महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने संबोधन से सभा को अनुग्रहित करें। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति परम आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री माननीय राजेश धर्मानी जी, हमारे यहाँ के डायरेक्टर माननीय सूर्यवंशी जी, रजिस्ट्रार महोदय, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन फैकल्टी मेंबर्स, माय डियर यंग फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अपने गृह जिला हमीरपुर में देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे अपने स्कूल और कॉलेज का कोई ऐसा समय याद नहीं जब हमें कभी भारत के राष्ट्रपति से मिलने का अवसर मिला हो। आप सौभाग्यशाली हैं कि उपराष्ट्रपति जी ने अपना कीमती समय निकालकर मेरे छोटे से जिले में, जो शिक्षा का एक केंद्र हिमाचल का माना जाता है, माननीय उपराष्ट्रपति जी, पूरे देश में अगर लिटरेसी रेट अगर सबसे ज्यादा कहीं पर देखा जाए तो केरल और हिमाचल में भी किसी जिले में देखा जाए तो उसका नाम हमीरपुर है। और आज के कार्यक्रम माननीय उपराष्ट्रपति जी ने केवल युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए समर्पित किए हैं। हमने बहुत कहा साहब ये करेंगे, वो कहा बिल्कुल नहीं। जो देश का वर्तमान और जो देश का भविष्य है, मुझे उसके लिए ही समय निकालकर जाना है और आपके बीच में, देश के युवाओं के बीच में जो वर्तमान और भविष्य है, उनसे मिलने के लिए ही उपराष्ट्रपति जी आए हैं। इससे पिछला कार्यक्रम एक से श्रेष्ठ का था, यानी एक टीचर 15 से 20 बच्चों को पढ़ाता है। ग्रीन क्षेत्र के सरकारी स्कूल के बच्चों को उनमें शिक्षा, सॉफ्ट स्किल्स वो सब करते हैं। मैल नरिशमेंट से बाहर निकालने के लिए, कुपोषण से बाहर निकालने के लिए उनको हम प्रोटीन मिल्क देते हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मात्र 1-2 सालों में आज 500वें केंद्र का लोकार्पण माननीय उपराष्ट्रपति ने किया। 9,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को मुफ्त में पढ़ाया लिखाया जाता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता यह है कि सर, इसी इंस्टीट्यूट के बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपनी ओर से भी साथ लगते इलाके में गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने भी जाते हैं। मैं उन सब युवाओं को जो अपनी ओर से भी आसपास इलाके में पढ़ाने जाते हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन। वो एक से श्रेष्ठ में नहीं सर, लेकिन वो अपने अलग से कार्यक्रम में जाते हैं। अब जब माननीय उपराष्ट्रपति जी को तो हमें सुनना, कुछ बातें मुझे यहां पर जरूर करनी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये केवल एक नारा, एक टैगलाइन नहीं, इसको चरितार्थ करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए युवाओं को, कश्मीर से है तो उसको तमिलनाडु जाने का मौका मिलता है, तमिलनाडु वाले को उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ आने का मौका मिलता है, हिमाचल वालों को नॉर्थ ईस्ट कभी जाने का अवसर मिलता है, देश जानने का अवसर मिलता है। आप में से भी कुछ लोग ट्रैवल करते होंगे, लेकिन मैं जब स्कूल कॉलेजेस के प्रोग्राम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जाता था तो मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को पूछा था कि आपने हिमाचल के 12 जिलों में से कितने जिले देखे हैं। 3 जिले देखने वाले मुझे 300 में से 3 छात्र नहीं मिल पाए थे। जब मैं पूछता हूं देश के कितने राज्य देखे हैं, तो शायद 2 राज्यों से ज्यादा मुश्किल से किसी ने देखा होगा। तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की भारत दर्शन योजना, सांसद भारत दर्शन योजना।
और उसके अंतर्गत मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पिक करके देश के अलग अलग हिस्सों में लेके जाता था। कभी राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, गवर्नर साहब, केंद्रीय मंत्री हों, हमारे अलग कंपनीज के एमडी, सीईओस हों, अलग अलग संस्थानों को, नासा हमारे एनडीए से लेके बाकी अन्य संस्थानों को देखने के लिए उनको वो सब कुछ देखने को अवसर मिला जो शायद जीवन में उनके माता पिता भी उसके ऊपर पैसा खर्च ना करते। मेरा सांसद होने के नाते शायद वो जिम्मेदारी नहीं थी कि मैंने जितने कार्यक्रम किए, मुझे कहीं ना कहीं समाज में लगा कि ये थोड़ा सा बदलाव होगा, यहां के बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोजर और मिलेगा एजुकेशन के साथ, तो बहुत बदलाव आ सकता है। तो हमने सांसद भारत दर्शन योजना नाम रखा, लेकिन उसका थोड़ी सी घुमाई, थोड़ी सी पढ़ाई। मोर एजुकेशन, मोर एक्सपोजर, more soft skills, they could learn how to behave in the, at various platforms. And let me say here, my experience in the last 4-5 years is that there are different, child today, after going through so many places, after meeting so many people, the confidence level is much, much higher. Earlier they used to think about becoming a teacher, engineer, doctor, or army officers. Today they are exploring many other opportunities. Similarly, in India, if you look at today, way back in 2014, just 10 years back, when Prime Minister Modi took over, he started a program called Startup India. Many said, what is Startup India? What is going to happen? Today, we can proudly say, 10 years back, it was nowhere, but today India is the third largest startup ecosystem in the world. Third largest. So that is the power of the youth. That is the power of the youth. अभी राजेश धर्मानी जी आपदा की बात कर रहे थे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपदा दुनिया की सबसे बड़ी कहीं पर आई तो कोविड काल में आई। महामारी और भूखमरी, ये दोनों एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि बचेगी कैसी 140 करोड़ की आबादी। लेकिन अगर कुशल नेतृत्व हो तो बचा भी जा सकता है, बढ़ा भी जा सकता है। और आपदा में अवसर के लिए एक नारा नहीं था, आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं था, ये वो सोच इसके कारण आज भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने वो करके दिखाया। 6 साल पहले तक आपके हाथ में जो मोबाइल फोन था वो मेक इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन ताइवान, मेड इन स्वीडन होता था। भारत सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर होता था। आज आत्मनिर्भर भारत के कारण भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द मोबाइल फोन्स बन गया है। If there is a will, there is a way. And we should look for opportunities when you're facing the crisis. और मैंने उदाहरण देके युवाओं के सामने कहा है, परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं होती, आपके भी होंगी, मेरे भी होंगी, सबके होंगी। क्या आपको लगता है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो कोई मुसीबत ना होगी? अरे कुछ दिन पहले बीच समुद्र में हमारे 19 लोगों को जिस तरह से अगवा कर लिया गया, शायद पुराना भारत होता तो गिड़गिड़ा कर किससे मदद मांगा होता। ये नया भारत है, वहां पर हमारे नेवी के कमांडोज गए और 19 के 19 हमारे लोगों को निकालकर भारतीयों को वापस लाए हैं। ये नए भारत की ताकत है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जी। रोने से क्या होता है, परेशानी से क्या होता है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, ऑपरेशन गंगा। 27,000 विद्यार्थी हमारे यूक्रेन में फंस गए थे। बम फूट रहा था, गोली चल रही थी, सब तरह से घिरे पड़े थे। 4 देशों की बाउंड्री पर भारत के मंत्रियों को भेजा गया। राष्ट्रपति पुतिन से, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की गई। बात तब की गई जब हमने देखा कि ऐसी जगह लोग फंस गए जहां पे बाहर की फौज भी है, उनकी अंदरूनी, जैसे मान लो हिमाचल की पुलिस भी है, देश की फौज भी है, तो सबने घेरा, उसके अंदर बच्चे फंस गए। ऐसी परिस्थितियों में से भी जहां दुनिया के देशों की नहीं चल पाई, वहां नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति और प्रयास काम आए। बगैर खरोंच लगे 27,000 विद्यार्थी वहां से निकलकर भारत सुकुशल वापस आए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तिरंगे झंडे को कभी कश्मीर में भी फाड़ दिया जाता था, पैरों तले रौंद दिया जाता था, जला दिया जाता था, और मेरे जैसा नौजवान जब युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मैंने कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की थी। आर्म्ड फोर्सेस पावर्स एक्ट, उसमें बदलाव ना हो,
कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता न दी जाए, कश्मीर में फौज के ऊपर पथराव बंद हो, कश्मीर में गोलीबारी बंद हो। इसलिए मैंने यात्रा की थी, हजारों किलोमीटर की, लाखों युवाओं को जोड़ा। मेरा अपराध है कि कश्मीर में जाके तिरंगा झंडा में फहराना चाहता था, मुझे जेल में डाल दिया गया 25 जनवरी को। मैं उस यात्रा को लीड कर रहा था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा राज्यसभा अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी को जेल में डाल दिया मेरे साथ, जो मेरा साथ देने आए थे अपने देश में तिरंगा झंडा फहराने के लिए। लेकिन आज धारा 370-35 से जो नासुआ बन गया था भारत के लिए, उसको सदा सदा के लिए खत्म करके आज कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग भी बनाया और कश्मीर की गली गली में आज तिरंगा झंडा भी लहराता है, लाल चौक पर भी तिरंगा झंडा लहराता है। यहां साथियों, परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। जब हम विकसित भारत 2047 की चर्चा कर रहे हैं, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा, यह आपके लिए है। 25 वर्ष आपके अगले इस अमृतकाल की यात्रा में आपका वो योगदान मांगते हैं जो विकसित भारत का निर्माण करें। आप केवल अपना जीवन जीने के लिए, अपनी नौकरी करने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं। मैं क्षमा चाहूंगा। आप करिए, यू कैन बिल्ड योर करियर, यू हैव अ ब्यूटीफुल करियर, यू मे बिकम अ सीईओ, यू मे बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू मे हैड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, बट एट द सेम टाइम you have to contribute towards the nation building process. जन भागीदारी से ही जन आंदोलन होता है और ऐसे लाखों युवाओं ने अपने प्राण त्याग दिए, बलिदान दिया, तब जाके आजाद भारत मिला। मैं आपको प्राण त्यागने, बलिदान देने की बात नहीं कहता, इतना ही कहूंगा, योगदान दीजिए और विकसित भारत का निर्माण कीजिए। डेवलप इंडिया बाय 2047। व्हाट डज डेवलप इंडिया ब्रिंग्स टू इंडिया? क्या मिलेगा? आज अगर पिछले 10 साल में 4 करोड़ गरीब जरूरतमंदों को पक्के मकान बनाकर मिल गए, 12 करोड़ शौचालय मिल गए, 45 करोड़ बैंक खाते खुल गए, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में उज्ज्वला में मिल गया, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंच गया, जब तक कि मात्र 3 करोड़ घरों को 70 साल में पहुंच पाया था। 65 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना में मिलता है। हमारे 80 करोड़ गरीबों, जरूरतमंदों को कोविड के समय 2.5 साल तक मुफ्त में मिला ही। अगले 5 साल की मोदी ने गारंटी दे दी है कि वो भी अनाज मुफ्त में मिलेगा, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, हमने अंग्रेजों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 10 साल में बन गए हैं। विकसित भारत बनेगा तब तो हम किसी और ऊंचाई पर होंगे, लेकिन अगले 5 वर्षों में फिर मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन जाएगा। तीसरी। अमेरिका, चाइना एंड इंडिया will surpass Germany and Japan in the next 5 years. That is how India is progressing. Many people said India is going to fail, India's economy is going to die. Let me say today, for the last 2 years, India is the fastest growing economy, and for the next 3 years, India is bound to be the fastest growing economy of the world. That means the world is looking at India. World is looking at India with great hope and with great pride. And it is up to the Indian youth, how do they deliver? So इसलिए मैं कह रहा हूं, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। और युवा की अगर मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी कुछ क्षेत्रों की बात करूं तो मैं इतना जरूर कहूंगा, खेल जो मेरे और आपके दिल के बहुत प्रिय है। एक समय ऐसा था सर, यहां पर खेलों का आयोजन का मतलब था घोटाले। खेलों का मतलब होता था कि ना जाने खेलों में कुछ मिलेगा नहीं। बट आज हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद खेलो इंडिया योजना लाई गई। पहले 4 वर्ष में 3000 करोड़ खर्च किया, अब मंजूरी मिल गई अगले 5 साल के लिए 3400 करोड़ रुपए की। इसके अलावा 800 करोड़ रुपए का बजट होता था खेलों का, जिसको 3 गुना बढ़ाकर 3200 करोड़ से ज्यादा कर दिया गया है, लगभग 4 गुना हो गया। और यही नहीं, इसके साथ साथ खेलो इंडिया योजना में यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स और पैरा गेम्स की शुरुआत भी की गई। भारत जहां खेलों में कहीं नहीं था, मैं कह सकता हूं 2 साल से खेल मंत्री हूं। टोक्यो ओलंपिक से मेरे समय शुरुआत हुई, आज तक के सबसे ज्यादा मेडल 7 टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल। हमने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 वुमेन बॉक्सर हमारी वर्ल्ड चैंपियन बनी।
थॉमस कप हम 72 साल में एक बार नहीं जीते थे, हम उसमें नंबर 1 रहे। कॉमनवेल्थ गेम में हमने 61 मेडल और 28 गोल्ड मेडल जीते। अन्य गेम्स फुटबॉल से लेके हॉकी तक हमने एशियन चैंपियनशिप जीती, 7 गेम्स जीती। और जब एशियन गेम्स की बारी आई तो मैंने कह दिया इस बार 100 पार। तो मीडिया के मित्रों ने कहा साहब कि पिछली बार 70 थे, गलती तो नहीं लगी, 100 कह दिया। लेकिन हमने सुविधाएं दी थी। मैं कह सकता हूं मैंने कहा था 100 पार, 107 मेडल जीतकर हमारे खिलाड़ी लाए हैं। और हम यहीं पर रुके नहीं। जब इससे अगला कंटिंजेंट पैरालंपिक्स इसका जाना था, एशियन पैरा गेम्स में, तो मैंने कहा क्या तुम 100 लाओगे? उन्होंने कहा साहब हम 107 से ज्यादा लाएंगे। और पैरा गेम्स में भी हमने 111 मेडल जीते, जो आज तक के रिकॉर्ड है। युवा साथियों, ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव हो। जब मीटिंग चल रही थी ब्रिक्स की, प्रधानमंत्री मोदी जी साउथ अफ्रीका में थे, तब दुनिया में कुछ ऐसा घटा कि ब्रिक्स की पूरी मीटिंग में सबका ध्यान केवल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर चला गया और भारत के ऊपर। क्या घटा था उस समय? है ब्रिक्स की मीटिंग के समय पक्का? आपने जिसने भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। ब्रिक्स की मीटिंग वहां पर हो रही थी, लेकिन भारत का तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा था। चंद्रयान मिशन की सफलता, ये अपने आप में भारत के बढ़ते कदम है। G20 की सफल अध्यक्षता हो, चंद्रयान मिशन की सफलता हो, खेलों में हमारे रिकॉर्ड मेडल हो, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम आगे बढ़ते हों। या एक छोटा सा उदाहरण देकर कहूंगा, 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे, हमने पिछले 10 साल में 76 नए एयरपोर्ट बनाए। 2014 तक 450 मेडिकल कॉलेज थे, हमने पिछले 10 साल में 700 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। 2014 तक 16 और 12 IIT और IIM थे, हमने अब उसको 7 और जोड़ दिए हैं। एम्स केवल 7 थे, अब हमने 23 कर दिए, 16 नए बना दिए। इसी तरह से 1100 यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो। 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी, हमने 4 लाख किलोमीटर नई 10 साल में बना दी। 90,000 किलोमीटर 4 लेन हाईवे, नेशनल हाईवे थे, हमने 55,000 किलोमीटर केवल पिछले 10 साल में बना दिए। ये बढ़ते भारत के कदम हैं। जिस तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये रफ्तार बढ़ने ही वाली है, रुकने वाली नहीं है। इसलिए जब आप इस NIT के 4 दीवारी से बाहर जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे अवसर भी होंगे, बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन फर्क आपकी सोच पर होगा कि आप क्या सोचकर चले हो। अगर आपने सही मायने में सही दिशा पकड़ ली, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, तो दुनिया में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जो कभी मोदी जी को वीजा नहीं देते थे, कहते थे क्या देश चलाएगा, आज दुनिया में विदेश नीति किसी का डंका बोल रहा है। जब पापुआ न्यू गिनी में जाओ तो वहां के प्रधानमंत्री मोदी जी के पांव हाथ लगाएं, स्वागत करें। इटली के प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता कहें, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको मोदी इज द बॉस कहें, और अमेरिका के राष्ट्रपति कहें पॉप को मिलने इतने लोग नहीं आए जितने मोदी से मिलने व्हाइट हाउस में लोग आए। तो इससे बड़ा और क्या बात होगी। ये भारत बढ़ते कदम है साहब, ये भारत के बढ़ते कदम है। मैं युवाओं से इतना ही कहना चाहता हूं, जब पासपोर्ट लेकर भी बाहर जाओगे तो आज भारत के पासपोर्ट की बहुत कीमत बढ़ गई है। हमें उपराष्ट्रपति जी को सुनना है, मैंने समय ज्यादा नहीं लेना, इतना जरूर कहूंगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस आएगा, नरेंद्र मोदी जी हम सबको उसमें संबोधित भी करेंगे। और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मेरा युवा भारत। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गो ऑनलाइन एंड रजिस्टर ऑन mybharat.gov.in. It's a physical platform. You can contribute online and offline. You can do the physical activities, you can do the digital activities. There are opportunities from the government, non-government organizations, the private organizations, where you can collaborate with them, you can volunteer, it can work on your leadership skills. मैं इतना ही कहूंगा, ये प्लेटफॉर्म आज के लिए नहीं, ये अगले कई 100 वर्षों के लिए बनाया गया है, युवाओं को जुड़ने के लिए और जन भागीदारी के लिए। तो इतना ही कहूंगा, आइए खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इसको आगे बढ़ाएं। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, आधा घंटा अपने लिए जरूर दें। और एक मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा
कि वी हैव टू मेक इंडिया अ ड्रग फ्री कंट्री। सो 3 बातें युवाओं के बीच में छोड़ के जा रहा हूं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड ड्रग्स फ्री इंडिया। सो स्टे हेल्थी, स्टे फिट, एंड आई एम श्योर वी गोना मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री बिफोर 2047। दैट्स द प्लेज वी गोना टेक। 5 प्रण मोदी जी ने कहे थे। पहला प्रण विकसित भारत बनाने का, दूसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का, तीसरा अपना गौरवशाली इतिहास पे गर्व करने का, चौथा एकता एकजुटता को बनाए रखने का, और पांचवा हर नागरिक को अपनी कर्तव्य पालन करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। तो ये 5 प्रण भी अपनाए हैं और मोदी जी ने 9 आग्रह किए हैं। ये 9 आग्रह जरूर देखें और उन पालन करें। रोजमर्रा की जिंदगी में आता है, वो माई लाइफ से जुड़ा हुआ है, आप अवश्य करेंगे। और माननीय उपराष्ट्रपति जो हमें कहकर जाएंगे उसकी भी हम पालना करेंगे। ये हमीरपुर के लिए बहुत सौभाग्य है, एनआईटी के छात्रों के लिए तो बहुत बड़ा, कि देश के उपराष्ट्रपति जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े, एक उच्च कोटि के वकील रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल रहे, और अब उपराष्ट्रपति बनकर हम सबके बीच में आए हैं। जोरदार खड़े होकर ताली लगकर स्वागत, अभिनंदन माननीय उपराष्ट्रपति जी के लिए जोरदार करते हैं ध्वनि के साथ। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। माननीय उपराष्ट्रपति जी का करते हुए ध्वनि से स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वैसे आवाज ऊपर से कम आई है, आई कि कम आई? जरा हाथ दोनों ऊपर करके मेरे साथ नारा लगा दें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, हार्दिक धन्यवाद। इसी क्रम में हम माननीय राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी से निवेदन करते हैं कि वे सभा को अपने वचनों से अनुग्रहित करें। एनआईटी हमीरपुर में आकर के अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सभी के लिए विशेष भारत के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम खेल मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री राजीव धर्माणी जी, इस प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी जी, यहां उपस्थित इस इशू से संबंधित सभी फैकल्टी, छात्र एवं छात्राएं, जिला प्रशासन के सभी लोग, देवियों तथा सज्जनों, विकसित भारत के संदर्भ में और विकसित भारत के आगे के जोश के संदर्भ में अनुराग जी ने सब कुछ बता दिया। एक सफल वक्ता का जो उद्गार हो रहा है, उन्होंने आप सभी लोगों के सामने वह खूबी व्यक्त किया है।
और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चयन किया है कि सारी कैबिनेट की जो भी मीटिंग होती है उस मीटिंग के बाद उसको परिभाषित करने का दायित्व दिशा होता है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री का होता है। और जब हम सभी लोगों ने मीडिया पर देखा होगा, चैनल पर देखा होगा, तो अपने विद्वत्पूर्ण वक्तव्य के लिए अनुराग जी युवाओं में तो याद किए ही जाए। मैं चूंकि इस राज्य का राज्यपाल हूं, इस राज्य को देवतुल्य माना जाता है। और अगर हम ये कहें कि भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर वीरता के लिए कोई माना जाता है तो भी हिमाचल माना जाता है। और उस वीरता में भी हमीरपुर को वीरभूमि के रूप में माना जाता है। भले हम बैठे हों, लेकिन रूम में भी जाएंगे तो पता लगेगा कि सोमनाथ सरा का नाम वहां भी अंकित है जो हिमाचल से थे। विकसित भारत 2047 अमृतकाल, दो 2047 तक देश की स्वतंत्रता पूरे 100 वर्ष की हो जाएगी। 100 वर्ष की स्थिति में हम कहां पहुंचेंगे, इसको इसी 25 वर्ष में पूरा करना है। यह 25 वर्ष का काल निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम यहां जो मंच पर हैं और आप, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी यहां बैठे हुए लोगों की है। टेक्नोलॉजी से हम भारत का विकास करेंगे, संस्कृति से हम भारत का विकास करेंगे, आत्मनिर्भरता के द्वारा भारत का विकास करेंगे। और जब हम आत्मनिर्भरता के द्वारा भारत का विकास करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें इस बात को गर्व से कहना पड़ेगा, मेक इंडिया। और इस मेक इंडिया पर जरूर हम सब लोग ध्यान देंगे कि जब हमारे स्थानीय उत्पादों को जो आज लोकल है हम उसके लिए वोकल रहेंगे तो कल वह इंटरनेशनल हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। इस पर हम सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें खुद को खड़ा करना पड़ेगा। भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें इस बात पर विशेष करके
विचार करना पड़ेगा कि पूरे विश्व में हम सबसे युवा देश के रूप में हैं। औसतन 144 करोड़ की आबादी में 29 वर्षीय लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इस नाते हम सबसे युवा हैं। मैं बात को आगे इस नाते नहीं बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि 4 बजे तक का समय है। उपराष्ट्रपति जी को जाना भी होगा, संबोधन भी करना होगा और आपसे इंटरेक्शन भी करना होगा। इस नाते मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारत के लिए यही कहा जा सकता है, जो आप नौजवान हो करके सिद्ध करोगे कि खुदी को कर बुलंद ना कि हर तहरीर से पहले खुदाबंद से पूछे पता तेरी रजा क्या है। यह तब होगा जब हमारा आत्मविश्वास होगा। यह तब होगा जब हम विकसित भारत के लिए कहेंगे नहीं, आज तो हम आगे बढ़ चुके हैं और जिस अमेरिका में जाने पर वेटिंग लिस्ट में भारत को मिलने का मौका रहता था, आज उस अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ बढ़ा करके भारत के प्रधानमंत्री से कहता है कि मुझे भी अपना ऑटोग्राफ दे दो। यही भी विकसित भारत की संकल्पना है, यही विकसित भारत की पूर्णता है कि खुदी को कर बुलंदिता की हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। यह सोच करके कि हम एनआईटी हमीरपुर के हैं, एनआईटी हमीरपुर की जिम्मेदारी बनती है कि वह विकसित भारत बनाने के लिए अगर लोग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जा करके अपना झंडा फहरा दिए हैं, तो हम हर जगह अपना झंडा फहराएंगे और विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ेंगे नहीं, विकसित भारत हर हाल में बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी से निवेदन करते हैं कि वे विकसित भारत 2047 में युवाओं की भागीदारी विषय पर अपने अमूल्य वचनों से सभा को संबोधित करें। Honorable Governor, Himachal Pradesh, Shri Pratap Shukla ji, I am grateful to him for accommodating me because we have a time constraint. Helicopter can take off only up to a time. But to be with you, I wouldn't mind even taking a road route. I will continue to. Honorable Minister of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, your most lovable Member of Parliament, and in his fourth term now, a fiery speaker, I have tasted it. So have you. Shri Anurag Singh Thakur, Shri Rajesh Dharmani ji, well, on the last occasion, I did not want to make a mistake about his name. But he has already taken note of it. Shri Rajesh Dharmani ji, Honorable Minister, Government of Himachal Pradesh. And the gentleman most important for you, you will always respect him but fear him, who gets the best out of you, virtually sucks your blood. Shri Hiralal M. Suryavanshi, Director. Trust me, every moment after you leave this campus, you will remember him and will be ever grateful that he made you spinally very strong.
I know it. I have loved only those teachers whom I feared the most while I was in school or institute. And he is enormously talented, a modest man. We have also, I don't want to miss out the registrar, so I am looking for her name. Yes. Registrar Dr. No, that's important. If there is no synergy between the two of them, university can't work, college can't work, institute can't work. The two have to be in sync with each other. Luckily for you, that. Dr. Archana Nanloti ji, distinguished members of the faculty, and I'm grateful to them because the body language of the students indicates they are getting best of the education, and therefore grateful to all of you. Of course, nothing succeeds in an institute without support of the staff members. I've seen from the time I stepped, they are very cordial and compassionate. Grateful to them. And most important, why I am here? I am here because of all of you. It is a rare moment in my life where all my calculations have gone wrong. All calculations have gone wrong. My wife, Dr. Sudesh Dhar, has accompanied me, but she has gone to an Anganwadi, so I thought I'll have full freedom. But I had to contend with High Speaker Anurag Thakur and the Honorable Governor, who has been very kind to me, but is enormously talented, a man of great experience. He has seen both state legislature and parliament. He has understood. The Anurag Thakurji has covered the entire landscape. Now, dear students, imagine the Herculean task I have before me. Anurag Thakur has performed excellently as he does in parliament, so in the field of sports. But here also, constitutional endorsement of his capacity, what have I to say now? So I remembered a ghazal I am very fond of. And as husband of Dr. Sudesh Dhankad, I will let her note down. I will let her down. I will make most of sense. तो गजल कहती है, इतने हिस्सों में बट गया मैं कि मेरे हिस्से में बचा ही नहीं. But let me tell you, boys and girls, पहले कहते थे दो बातें. Heavens are falling, they have never fallen. Historically, heavens have never fallen. We have always been in fear of it. So get this fear out of your mind. Heavens will not ever fail, they will never fall. This is my assurance and insurance. Keep it in mind. So no tension, no stress on that count. Second, we will say sky is the limit. The Prime Minister has acted in a manner, sky is not the limit now. We have gone beyond the sky. And today it's a great day. Our Aryan has entered the most critical phase of sun. I have been extremely impressed by the motto of your institute. There's no substitute for hard work. But then you have a challenge coming, artificial intelligence. And therefore I'll be addressing on some of the issues which normally I cannot address elsewhere. I am fully alive to the situation that I am before minds who are discerning, able, competent, and are at a level to use technology, which we call disruptive technologies, and unless we cope with them, control them, regulate them,
they will control us. My experience of having been a married for 45 years, make sure before others control you, give up your control. This message you can remember all your life and you will never regret. Normally as a senior advocate, I have never been given an opinion without charging my fee, which was fairly high. I have made a rare exception to give you this advice free of cost. Well, before I really come serious business, that doesn't mean the first one was not serious, that equally serious. I would request the director and Sri Anurag Thakurji. I will invite students of this prestigious institute to be my guests at Parliament, visit new Parliament building, Bharat Mandapam, Yashobhumi, Prime Minister's Museum, and whatever else Anurag Thakur suggests. The Honorable Minister is very competent to take care of everything, but since the invite is from my side, your stay will be arranged by Parliament. We will take care of the rest. You just be available to prestige your MP for a change for me. Boys and girls, Bismarck used to say, let the winds of change blow. Germans are innocent, talented people, but they will be getting a major setback in 2030. The setback will be that Bharat would have overtaken their economy and will be the third largest economy. But notwithstanding that, Germans say something in particular. We have to follow them in several situations. And therefore, I would urge you that we must look beyond our barriers. We must look beyond our geographical boundaries. And that is why the German Bismarck said, let the winds of change blow all over. From that perspective, being chairman of the Indian Council of World Affairs, I would catalyze a memorandum of understanding between this institute and Indian Council of World Affairs in next 1 month. And that MOU will enable you to get some of the best minds of the world to interact with you here. And maybe on occasions, Indian Council of World Affairs may invite you to Delhi, in Sapru House. It's a very prestigious institute. These are the two things. And the third, when you will visit Parliament, I'll have the occasion to share with you. This subject, role of youth in Viksit Bharat 2047, and the local Devbhoomi, land of gods. So we are in a perfect setting to bestow attention on this. I am before whom? I am before foot soldiers who will play a critical role in realizing our dreams. They will ensure what Bharat will be, in what shape it will be, when it attains centenary of its independence in 2047. I am a product of education. I come from a village. I have faced all kinds of hardships. But for scholarship, I may not have gone beyond my village. And therefore, I have no difficulty in asserting before you. Education is the most important, impactful, transformational mechanism. Education brings about equality as no other organ can do it, no other methodology can do it. Education cuts into inequities that are very painful to us. And therefore, you are lucky to be getting in Bharat, 1/6 of humanity resides in this country, the best of education. Make the most of it. Don't miss the opportunity. My young friends, when I say so with full sense of responsibility, you are architects of Bharat to be. There are no more
concerned stakeholders in governance than you. People of my age will not be there to see what Bharat will be at 2047. But I have no doubt each one of you boys and girls will take Bharat to 2047. And for that I'll come in a moment why things are very congenial for you. Honorable Governor, during his brief address, made a very significant contribution. Very important aspect. That when it comes to demographic advantage, India is possessed of it. It is possessed of it to the extent that 65% of our population is under 35. Now when we have prospects because of demographic dividend, look at the history. The countries that had demographic dividend in 1980, 1990 made a significant progress. The progress was geometric, exponential, and absolutely phenomenal. It is India's century. India will perform. India will perform for itself. India will perform for the world. We are in Amrit Kaal. Thanks to the visionary leadership of the Prime Minister, we could have this word Amrit Kaal. And we all came conscious that we have a civilization of 5,000 years old. Look at our ethos. And that being the situation, series of steps were taken that made our Amrit Kaal as our Gaurav Kaal. As a young mind, let me tell you, you must have burning desire to make the difference. You must have insatiable thirst for knowledge. And trust me, your learning doesn't end with your degree. Your learning has to be throughout. Even in a river, when you stand, those who are involved with physics know it. If you don't have Kadam Tal, the sand under you will go and you'll fall down. So to be at the same place also you have to learn, and to go ahead, you have to learn all the more. You need to collaborate, weave diverse considerations so that you are on a path which is positive. Let me tell you now, where are we? I'll go historically. We had a glorious past. Go to 5,000 years, not many countries can claim to have civilizational depth of even 500 years. I'm making reference to some of the most developed and including the most developed. Not 500 years, 5,000 years. There is no wisdom which the world can point out even today which is not repository in our Vedas and Upanishads. So we are an ancient civilization. We had a flourishing trade. We were controlling the world, and we were known as Sone ki Chidiya. Then we suffered. I'll come to this century now. Skip rest of it for paucity of time because we need to monetize every second of it. Am I sure? Let me reflect briefly and divert. I don't mean offense to anyone. And I greatly love the Bania community. In legal profession, I was called a Bania all through. Mr. Sunil Gupta, alumnus of IIT Kanpur, 1987 batch, senior administrative service. But my apologies to him because he comes from that community. जब बनिए से पूछते हो और जिसका बेटा आईसीयू के अंदर दिक्कत में है, उससे पूछते हो कि बच्चे का क्या हाल है, तो वो कहता है 2 पैसे सुधार है. You my point. So from that perspective, you have to keep the 2 paisa means your national interest. Never compromise that. ये कौन सा देश था? सोने की चिड़िया. You were known as सोने की चिड़िया, and rightly so. I had the good fortune to be elected to Lok Sabha in 1989. And Anurag Singh Thakur's father, a very illustrious man, a guiding figure to me. I have come to Himachal Pradesh only at his invite. It is only coincidence that this invite is by his son. We suffered at that point of time. That gold of this country was airlifted physically
to be placed to 2 banks in Switzerland so that we can sustain our financial viability and credibility. I was a Union Minister then. A junior one, Anurag Thakur is a very senior one. So, where are we now? That time our foreign exchange was fluctuating between 1 billion and 2 billion, and now it is over 6 billion. And there have been weeks where the jump has been 4 or 5 billion. That's a big change that has come place. Just look, you are youngsters, but you can reflect and know from others also. In the early part of the century, we had suffered scams of unimaginable dimension in this country. They bled the economy of this country. They ravaged the ecosystem of this country. Corruption was in full play. I had the occasion when phone banking expression was used in Parliament, Rajya Sabha, by the Finance Minister, enormously talented Srimati Nirmala Sitharaman. She used the word phone banking. Manika, Honorable Minister, I know the lexical meaning of phone banking. Can you tell me what is meant by phone banking? She said phone banking was that somebody would pick up a phone and give 300 crores to this man, 3,000 crores to this man, without sense of accountability or transparency. With the result, the nation suffered NPS. So we had that kind of regime. And then it had an overall impact on the economy. And in 2012, 2013, our economy was labeled in the world as being fragile 5, which means fragile 5. We were a burden on the global economy. Imagine a country home to 1/6 of humanity being burdened on the global economy. And look at where we have come. As rightly indicated by Shri Anurag Thakur in his absolutely fiery speech, which matches that of who's Julius Caesar? And what does the gentleman say? He takes on Brutus. Am I right? He said so. We have traversed such a long distance after overcoming a difficult terrain full of challenges, but all has been brought about. We are already the 5th largest global economy. We are on way to becoming 5 trillion global economy in US dollars. And by 2030, as indicated by the Honorable Minister, Germany and Japan will be behind us in terms of global economy. But then our benchmark is not to be at the top. Our benchmark is to be so much at the top that the second one can't be seen behind us. And that is the challenge we all have in 2047. There was a time when India's voice in the world was just not heard, just ignored. And look at the first address of the Indian Prime Minister at United Nations. He speaks in Hindi. He tells the world, how can this institute function if 1/6 of humanity is not in key driver's seat? And then he used the United Nations to declare to the entire world that yoga, a health mechanism which is salubrious for one and all, which has come to us from ages, was adopted by the world, International Yoga Day, at his call. The largest number of countries in the world in the shortest time recognized June 21 as the International Yoga Day. On the last International Yoga Day, I was there at the national event at Jabalpur, and the Honorable Prime Minister was there at United Nations premises. Again to the word yoga. Not only that, we have gone further, and when it came to G20, of which reference has been made by the Honorable Minister, but at your level, discerning minds, intellectual minds who are to control all forces and converge them to see that they go in favor of country's growth. I must tell you 4 distinct things of G21. Imagine all world leaders were greeted by the Prime Minister, and look at the backdrop, Konark Sun Temple. They walked through a gallery where they saw India's 5,000 years of civilizational growth and ethos. That's one. Second, the initiative taken by the Indian Prime Minister
The European Union was already part of G20. And European nations were those that would rule over us and others. Prime Minister made it a point to have African Union included in G20, which means what an equalizer. A great step taken by. Third, Global South constitutes more than 60% of global GDP, but their voice did not count. Our Prime Minister took historic initiative, successful initiative, became the voice of global voice, held here important conferences, and we have now in the world a very stabilizing factor. And fourth, which will matter to all of you, we have a corridor now. That corridor from our land, from our sea and Middle East, which is already there, it will open up vistas of economic opportunities for you. You all have to avail of it. What we have done, don't go back. Just see recently, our constitution was plagued by a provision, Article 370. Framers of the constitution has called it temporary, but the nation had suffered it as if it was permanent. It was undone. Historic step. Draconian 35 capital A. Anurag Thakur suffered the pain in his heart. He could not unfurl national flag in Jammu and Kashmir. And look at the change. G20's most important meeting took place at Srinagar. World leaders were there. It has tourism to an extent which is remarkable now. And most importantly, a group of people thought the destiny of the people of Jammu and Kashmir was nestled in their hands. That concept is over. A big change. Another big change that has taken place is that we have had a culture of patronage, nepotism, favoritism, meritocracy was backseat, if at all. Now, कानून से ऊपर कोई नहीं है. कानून की दस्तक हर किसी के लगेगी गलत काम किया तो. No one is above law. You may be anybody. You have to be accountable to rule of law. If there is no equality before law, we can't claim we are living in a democratic nation. The fundamental essence, quintessential aspect of democracy is that all are accountable to law. As young minds, you have to use your brains. How can some people, when law takes its course, they take to streets? Can we accept it? Our courts have a robust mechanism. Our judiciary is independent. It has established its independence repeatedly, but they will take to streets. We have to cut down this menacing trend, and for this aspect, young minds have to be extremely innovative. Your silence at critical issues will resonate in your years to come, because those who observe silence for a long time at a critical time when they should be speaking out will suffer silence forever. Bharat cannot afford to do it, because global stability and peace and harmony depends on Bharat. Second aspect, for 3 decades, Parliament struggled to secure reservation for women. It did not happen. It happened last year. I had the good fortune on 21st of September 2023. That day it was taken up in Rajya Sabha. 17 members of Parliament, who all were women, presided the House on that day. 17 of them, from Jaya Bachchan ji to P.T. Usha to Konakji, everyone. And now there will be vertical, horizontal, structured, constitutionally sanctioned reservation to the extent of 1/3 in Lok Sabha and state legislatures for women. And that I can assure is minimum. Because I know the power of womanhood, enormous power. It was a gratifying moment for me when I was invited yesterday for NCC program
in the National Capital Territory of Delhi. 39% of girls are there. Male section is 61%. Matter of time, and young boys, be assured, if there will be need for your reservation, I'll be your foot soldier. But that prospect looms large, so you will have to give your very best of it. When we talk of Chandrayaan 3, we talk of the rocket woman. When we talk of fighter pilot, we talk of a woman. Every aspect of life which makes us proud, woman-led contribution is great. If you look around the globe, and this is your concern because that's where you will be stepping out in the larger world. Look at the participation of our women in global corporate system. Then look at what the world says about us. There was a time everyone used to lament about India. No one seriously. India means assistance has to be given to India. Now International Monetary Fund says India, as the Honorable Minister rightly indicated, fastest growing global economy in the large scale. World Bank says digitization. India has done in 6 years what is not practicable for other nations in 47 years. He says, a sensible man. And then our UPI is being taken care of by Singapore by way of adoption, other nations. When it comes to ISRO, we are putting in space satellites of which countries? USA, UK, Singapore, developed countries, because good value for money. So our progress is so phenomenal, and it has been incremental for last decade. You have to ensure its stability and rise, and that depends on your commitment, your direction. And I'm sure you are in the right hands of your faculty, but please think out of blue, think out of in a manner so that your idea gets fructified. Never have fear of failure. No one in the world has succeeded with a great idea without failing. That doesn't mean that you are necessary to fail for an idea to succeed. You can succeed also without failing. But failure per se is not a handicap. A concern that has been addressed very effectively is concern of the last in the row. Think within yourself, you don't have to indicate. Think within yourself, could you ever imagine that in this country there will be a toilet in every household? We have it. Could you ever imagine that 100 million households, poor households, जहाँ फूकनी मारकर हमारी माँ, दादी, नानी, बहन, बेटी खाना बनाती थी, आंखों में आंसू आते थे, they will get a gas connection. Could you ever imagine that there will be water available in a tap in a household? I have seen in my own village women traversing a distance of 4 to 5 kilometers from the well on a head pitcher getting water for us. Could you ever imagine? Could you ever imagine that more than 250 million houses are made available by way of planning, and major part of it is fructified, where woman is owner, major part of it. So this big change has come on one count: strong leadership, action-oriented leadership, proper vision, full mission, right execution, attended with expedition. I am saying so this to you. Why? Because we didn't have that environment. You have that environment. Zero accommodation for corruption, transparency, accountability, new norms of governance. If you have an idea in your mind, funds are not an issue at all. And therefore, my suggestion to you will be that make most of the opportunity that is available to us. Affirmative governance is not easy. When you take affirmative governance as a new norm, there will be people around to muddy your water.
And our country, there are a small category of people who can't digest growth of this country. Whenever there is a big event taking place in Delhi, something of which the entire nation has to be proud, their digestive system fails. And they come out with statements only to tarnish, demean, taint our institutions, demean our progress. How can that be allowed? Now tell me, if there is a sinister narrative which is anti-national, and you know it is anti-national, is it not our joint obligation to neutralize it? I can understand a layman talking about economy. He doesn't know what is inflation rate. He doesn't know what is growth rate. I can understand. But if someone who has held a high position in economic situation of the country, after not getting that position for a second term, talks about economy in a nonsensical manner, I am using this word with full sense of responsibility. You tell the entire world it can't be more than 5%, and the writing on the wall today is 7.5%. Does he not take note? Does he not take note of the situation that our digital transactions in 2022 were 4 times combined transactions of USA, UK, France and Germany? How can he ignore the fact that per capita internet consumption of Bharat was more than that of China and USA taken together? He knows it. So boys and girls, I am making a very serious statement now. And this is for your consumption so that you can catalyze a movement for it. The most dangerous thing is that an informed mind, a recognized mind, a mind that has held a position of power, a mind who is supposed to know everything, a mind in whom there is faith of the people that he can say nothing wrong. He abuses that authority and monetizes ignorance of the people for political gain. Such kind of narratives have to be busted at the initial stage. And who is competent to do it? The people before me, those at the back. And let me tell you, I indicated at several places, in educational institution, there are only backbenches. There are no backbenchers. Those who are in the last row are as important as those who are in the front. And therefore take initiative and try to contribute to the nation as we should be doing. Look at when the Prime Minister was on a state visit to the United States. He was addressing the joint session of Senate and Congress. When he said AI, everyone understood artificial intelligence. And the Prime Minister said AI means America, India. There was thunderous applause. Why America, India? The two are democratic nations. They share common platform of human values. Thunderous applause. India's Prime Minister image and the value of your passport has made a quantum jump. And therefore let me come to the next point. 1. Disruptive technologies. Ordinary students are not concerned with it. But those who are before me are concerned with it. You have to address artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, and that is why you have to keep in mind that India is one of the few countries in single digit who have taken initiatives with respect to quantum computing. There has been an allocation of 6,000 crores for quantum computing commission. You must know it. My generation people would think that 6G means nothing but a faster communication on mobile. But you know it has wonders. You know it more than I do. I will take time to learn, you will not. You will grasp it immediately, magnetically. So quantum computing is one. Green hydrogen mission. We are one of the 7 countries in the world to focus attention on this. It has enormous potential. On an estimate by 2030, there may be 8 lakh crore investment and 6 lakh jobs. Green energy, focus on that. Machine learning, so very important
In a minute, we may have data in millions and billions. Someone has to discern it to see. Security concerns have to be addressed by analyzing such data. Now, these are the thoughts which I can't indicate everywhere. I have been to several IITs, shared my thoughts. There has been great response from the students. And I will also, you see, there is not much time. How much time is left? Huh? Time क्या है? नहीं, time क्या है? अच्छा, 4:10. So we really don't have time. I quite understand. You see, to facilitate governance, we had August 15, 1947 Trust with Destiny. But when it came GST regime unfolding, there was another midnight joint session of Parliament, Tryst with Modernity. Everyone arose. Good and simple tax can never be achieved. Goods and services tax can never become good and simple tax. Everyone is happy now. We have to bring about the change which is good only for the nation. We have to ensure people adapt to change. So you will go in that direction. Well, I have suddenly become conscious as I become conscious of the presence of my wife. I become conscious of time for a change. Constant of time means I use this platform to send a message to corporate leaders, to business tycoons, those engaged in industry, chambers of industry, business and trade. Please handhold institutions. Research and development is driven only by corporates in the world where the countries are developed. You need to focus on our institutions. Our institutions, our boys and girls have potential much more, intellect much more than those of others. If there is intellect available in outside institutions, it is because of Indian component. And therefore, I am surprised, I don't want to name them. It pains my heart when Government of India gives $5 million assistance in 2009 to a foreign university. Why not to our universities? How can Government of India at that point of time give $5 million to another American university? $50 million were given by a business house. I don't want to make issue of it. Let us never look back. When you look back and carry the past baggage, we can't move ahead. But now I appeal that there must be concerted endeavor that our institutions are handheld by corporates to engage into research and development and placement. And for that, alumni of all institutions must come together on one platform. They will be the world's most important, impactful think tank in policy making. Rest will connect as and when I get another opportunity. Thank you so much for sparing your time for me. And it is first of its kind that in Devbhoomi I have said on earlier occasions when I inaugurated to Dharamshala the first flight. Dhumal Sahab was their member parliament. I expressed sense of gratitude to him. When I had a good meeting at Shimla of more than 1,000 lawyers, I again expressed my sense of gratitude to Dhumal Sahab. I am now privileged and honored to express a similar sense of gratitude to his son, enormously talented son of your soil, Shri Anurag Thakur. Thank you so much. आज के इस स्नेह एवं ज्ञान से ओतप्रोत संबोधन के लिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समारोह के अंत में आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल
हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है